Friends, today we will talk about some multiple choice questions that I have designed for the 3D block elements such that they can give you a insight into the core principles underlying these particular multiple choice questions. Now let us take up the first question, which you encounter quite frequently, but I have rephrased it in a slightly different manner. Now the question reads, which pair amongst the following are the strongest oxidizing agents? That means the question is asking that we have given a set of pairs. The choices, the four choices are vanadium 3, chromium 3, this is one pair. The second pair is manganese 3 and chromium 3. The third pair is manganese 3 and cobalt 3. And the fourth pair is iron 3 and cobalt 3. Now, what we want you to answer is which one is the right choice. That means either we should say that A is the right choice. When we say if A is the right choice, that means the pair vanadium 3 and chromium 3 are the strongest oxidizing agents amongst all of these pairs, that means B, C and D. Now, how do we go about answering this question? To be able to answer this question, we need to have the understanding of the reduction potentials of the couples or the redox couples that we are actually looking at. That means, for instance, if in our A choice we have vanadium 3 and chromium 3, then we need to know the reduction potential of vanadium 3 oblique vanadium 2 redox couple, and similarly the chromium 3 chromium 2 redox couple, because if vanadium 3 is a strong oxidizing agent, a oxidizing agent gets reduced. That means the vanadium 3 will go into vanadium 2. That is why we need to know what is the reduction potential of vanadium 3 and vanadium 2 couple. Similarly, we would like to know what will be the reduction potential for chromium 3 and chromium 2 and so forth. Now, दोस्तों मैं इस बात को आपको हिंदी में भी कह देता हूँ एक बार कि हम इस सवाल का जवाब तभी दे पाएंगे जब हम यह जान पाएंगे कि वेनेडियम 3 और वेनेडियम 2 का जो युग्म है, जो रेडॉक्स युग्म है, उसका अपचयन विभव क्या है, यानी कि जो रिडक्शन पोटेंशियल क्या है. क्योंकि हमें रिडक्शन पोटेंशियल से ये पता चलता है कि ये जो वेनेडियम 3 है ये वेनेडियम 2 में ट्रांसफॉर्म होगा या नहीं होगा, या वो फेवरेबल है या नहीं. इसलिए इस सवाल का जवाब देने के लिए हमको इन रिडक्शन पोटेंशियल्स के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है. अब आप यह देखें कि यह जो वेनेडियम 3 वेनेडियम 2 है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है. सिमिलरली इफ यू गो फॉर chromium 3 chromium 2, the reduction potential is negative. But for the remaining 3, that is manganese 3 manganese 2, it is plus 1.53, यह पॉजिटिव है. कोबाल्ट 3 कोबाल्ट 2, यह भी पॉजिटिव है इसका रिडक्शन पोटेंशियल, और आयरन 3 आयरन 2 का भी पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है. So what is the meaning if a reduction potential is negative? The meaning of a reduction potential being negative is, that means if you put it into the Gibbs free energy equation, delta G equal to minus NFE, then your Gibbs free energy will be positive, and that means this will not be a favored reaction. कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो अपचयन
विभव है इसका वेनेडियम 3 वेनेडियम 2 का, क्योंकि यह नेगेटिव है, इसलिए इसको अगर आप गिब्स मुक्त ऊर्जा के इक्वेशन में डालेंगे तो जो गिब्स एनर्जी है वो पॉजिटिव हो जाएगी, और इसका मतलब यह है कि यह फेवर नहीं होगा। तो जब रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है तो इसका मतलब यह है कि यह वेनेडियम 3 वेनेडियम 2 अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जाएगा। वो नहीं जाएगा का क्या मतलब हुआ कि वेनेडियम 3 जो है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। So from the reduction potential knowledge, we can predict whether vanadium 3 is a good oxidizing agent or not. Similarly, chromium 3 is a good oxidizing agent or not, and so forth. So now you can figure out the answer very clearly. If your reduction potential is positive, that means the lower oxidation state is preferred. That means manganese 3 can go into manganese 2, and so forth. Cobalt 3 can transform into cobalt 2, and iron 3 can transform into iron 2. So all these three, manganese 3, cobalt 3 and iron 3, in their aqueous solutions should be oxidizing agents, whereas these will not be oxidizing agents. So very clearly now we can figure out what our answer should be. Naturally we can cross out this choice because these will not be oxidizing agents, good oxidizing agents. Similarly, in this case, in this pair, this will be a good oxidizing agent, but this is not, so we can cross this also. In this case, this is a good oxidizing agent, and this is also a good oxidizing agent. Look at the potential. This cobalt 3, cobalt 2 positive potential, that means the reduction potential is plus 1.9, which is very high. Similarly, over here, Mn3, Mn2, ये जो अपचयन विभव है ये प्लस 1.5 है, ये काफी ज्यादा है पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पेयर है ये इन सारे पेयर्स में से सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग कैपेबिलिटी का होगा, इसलिए हमारी राइट चॉइस जो है वो सी है, और डी भी नहीं है। डी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, पर आयरन 3 आयरन 2 का देखिए रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो Mn3 Mn2 से कम है। इसका मतलब ये है कि आयरन 3 जो है वो Mn3 के मुकाबले रिलेटिवली लोअर ऑक्सीडाइजिंग कैपेबिलिटी का होगा, और इसलिए हमारी चॉइस यहाँ पर Mn3 कोबाल्ट 3 के ऊपर रेस्ट करती है। अब हम इसी प्रकार से एक दूसरा क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ले लेते हैं। इस सवाल के अंदर पूछा यह गया है कि which one of the following pair will not be oxidized to higher oxidation state by acidified dichromate. Now you know very well and you have read that acidified dichromate solutions are oxidizing agent. In fact, it is a fairly powerful oxidizing agent. Now very easily the choices are A, iodide, sulfide, disulfide, sulfide 2 minus, and vanadium 2, iron 2, tin 2, iron 2, iron 3, and tin 4. Now it is very clear that since this is a good oxidizing agent in acidic media, its potential must be quite positive. That means its reduction potential should be pretty positive, so that the +6 oxidation state can take up electrons and it can convert into the lower oxidation state of chromium +3. So this is a good oxidizing agent and itself getting reduced to chromium 3. Now obviously if you look at the A choice, the A choice has basically anionic type of moieties, iodide minus and S2 minus. Now both of them are large anions. Iodide is fairly down the group. You have fluoride, chloride, bromide, and then iodide. It is a very large anion. So you have a large anion over here, and so let us say large anion, and so is sulfur. Sulfur is actually coming after oxygen only, but since it is bi-negative, since that it's doubly negatively charged, it also doubly negative charged
anions are also large in size. So if you have large anions, these large anions are actually capable of getting easily polarized. That is to say कि इनके इनकी इनके बड़े साइज की वजह से जो इसके ऊपर जो ये चार्ज है ये बहुत लूजली हेल्ड है, ये बहुत इसके ऊपर न्यूक्लियस का बहुत अधिक प्रभाव नहीं है, कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है, तो इसको आसानी से हटाया जा सकता है. दैट मीन्स both of these can be oxidized very readily by dichromate, so this cannot be our choice. If you look at vanadium 2 iron 2, again you can see from here vanadium 2 we know basically will oxidize to easily to vanadium 3, because if you reverse this potential, this will become positive, so the Gibbs free energy will also become positive. Again iron 2, yes, in this case the fact is that this may go in the reverse direction, but the point is that the potential, the oxidizing potential of dichromate ion in acidic media is very much larger than plus 0.77. So because it is a much better oxidizing agent, therefore it will oxidize iron 2 to iron 3. So naturally this pair will also get oxidized. So this is also crossed out, because we need to find out, हमें ये जानना है कि इस सवाल के अंदर कि कौन सा पेयर जो है वो डाइक्रोमेट आयन से, एसिडिफाइड डाइक्रोमेट आयन से ऑक्सीडाइज नहीं होगा. तो ये दोनों तो क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा है इन एनायंस का, इजीली ये जो है ऑक्सीडाइज हो जाएंगे. वेनेडियम 2, आयरन 2, इनके भी पोटेंशियल बहुत लो हैं, तो इसलिए भी ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे. टिन 2 और आयरन 2 ये भी बड़ी आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, बिकॉज टिन 2 जो है वो भी इजीली ऑक्सीडाइजेबल है, आयरन 2 भी इजीली ऑक्सीडाइजेबल. अब हमारे पास चॉइस रह गई, जो राइट चॉइस है वो है आयरन 3 एंड टिन 4. जाहिर है आप जानते हैं कि अगर डाइक्रोमेट सॉल्यूशन आयरन 2 को आयरन 3 में ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या यह आयरन 3 को आयरन 4 में भी ऑक्सीडाइज कर सकता है कि नहीं. क्वेश्चन ये है, नहीं कर सकता. इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इसका जो ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल है वो इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए बहुत कम है, और वो इसलिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आयरन 3 से आयरन 4 का, इसको बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल चाहिए, और इसलिए यह जो ऑक्सीडेशन है यह इस डाइक्रोमेट आयन से संभव नहीं हो पाएगा. इसी तरह से जो टिन 4 है, अब टिन 4 तो टिन 5 में जाएगा ही नहीं, क्योंकि आपको मालूम ही है कि जो टिन है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो S2P2 की तरह से है, तो उसमें तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है निकालने के लिए. तो आप ये देखिए कि उसके अंदर चूंकि 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं, देयर ओनली, सो इसलिए उसकी मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपको 4 ही मिल सकती है. टिन 5 में तो इसको जाने का कोई मतलब ही नहीं है. इसलिए यह जो पेयर है आपका, इस पेयर को डाइक्रोमेट आयन ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा. सो दैट इज आवर राइट choice over here. Now let's take up one or two more questions. So let's rub this out first. So our next question says that we have a cobalt complex, a cobalt complex with 6 ammonias. So it is basically a hexamine cobalt 3 complex, and with 3 chloride anions outside. And so this is our question number 3, a multiple choice question. This is cobalt NH3 whole 6 Cl3.
naturally there are 3 anions, so this has to be +3 charge, this is +3. So oxidation state over here is +3 for cobalt, and it has inner sphere ligands as ammonia. Now the question is that what will be the number of unpaired electrons? That means the magnetic moment will correspond to how many unpaired electrons? That is the question. So the question says this complex shows magnetic moment due to, and the choices are, so let's take up the choices. Our choices are: number A, you have basically 4 unpaired electrons. B, 2 unpaired electrons. C, 1 unpaired. And D, 0 unpaired. So प्रश्न यह पूछ रहा है कि अगर आपके पास कोबाल्ट हेक्सामीन ट्राइक्लोराइड का एक संकुल है, कॉम्प्लेक्स है, तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, जो उसका चुंबकत्व है, वो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा? 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, या 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? ये हमारा प्रश्न है और हमारे पास 4 चॉइसेस, हमें ये तय करना है कि इसमें से कौन सा सही है। अब इसके लिए आपको कोबाल्ट 3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, और क्योंकि इसमें एक लिगेंड फील्ड लगी है, तो आपको मालूम है कि लिगेंड फील्ड की वजह से जो आपके डी ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, एक T2G सबसेट में 3 और 2 EG सबसेट में। तो इसका हमारा डायग्राम इस तरह का बन जाता है कि ये आपके डी ऑर्बिटल्स हैं, 5D ऑर्बिटल्स, लेट मी से डी ऑर्बिटल्स, और लिगेंड फील्ड की प्रेजेंस में ये आपका लिगेंड फील्ड है, ड्यू टू लिगेंड फील्ड। तो इस लिगेंड फील्ड की प्रेजेंस की वजह से ये डी ऑर्बिटल की डीजेनरेसी जो है, जो समकक्षता है, वह जो है छिन्न भिन्न हो जाती है, और आपको 3 ऑर्बिटल लोअर स्टेट में मिल जाते हैं, जिनको कि जो है बेसिकली DXY, DXZ, DYZ, और ऊपर के जो हैं वो हैं आपके DX² -Y² और DZ²। अब अगर आपको, आप बॉक्स डायग्राम को अगर आप फिलअप करेंगे, अब कोबाल्ट 3 जो है वह एक D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका। दैट मीन्स इसके 3D ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब आप 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ कैसे हाउस करेंगे? तो इसमें आप पहले इनको सबको अनपेयर्ड रखेंगे, तो एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर, और उसके बाद फिर एक पेयर हो जाएगा। तो अब आपके पास इस सिचुएशन में 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच गए। तो आप कहेंगे कि हमारी चॉइस ए है, लेकिन यह ए चॉइस नहीं है, ये इनकरेक्ट है। इसका मतलब यह है कि यह जो डायग्राम है, यह डायग्राम ठीक नहीं है हमारा। और ये ठीक क्यों नहीं है उसका हम अभी जवाब दे देते हैं। यह एक हाई स्पिन कॉन्फ़िगरेशन है,
हाई स्पिन से क्या मतलब? हाई स्पिन से मतलब कि यहाँ पर सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पहले अयुग्मित रखे जाते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रखे जाते हैं, उसके बाद फिर जो छठा इलेक्ट्रॉन है वो पेयर अप होता है, जैसे हमने नीचे लिखा है। लेकिन यह जो अमोनिया है ये भले ही इंटरमीडिएट लिगेंड फील्ड का हो, लेकिन चूंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट का D6 है, तो वो ये इंटरमीडिएट लिगेंड फील्ड भी काफी है, सफिशिएंट है कि वह इसको एक हाई स्पिन की बजाय एक लो स्पिन सिचुएशन में ले आए। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपका जो है डायग्राम जो है वो हो जाएगा ऊपर कोई भी नहीं रहेंगे, आपके सारे के सारे जो छह के 6 इलेक्ट्रॉन है वो नीचे T2G सबसेट में पेयर हो जाएंगे, पेयर्ड। तो चूंकि ये सारे पेयर्ड हैं, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है, तो हमारी चॉइस डी है। ना हमारी चॉइस ये है और ना ही हमारी चॉइस ये है, ना हमारी चॉइस ये है, हमारी चॉइस ये है। अब इस सवाल को सही उत्तर देने के लिए आपको क्या आवश्यकता थी? आपको किस इंफॉर्मेशन या नॉलेज की आवश्यकता थी? ये इंफॉर्मेशन नॉलेज की आवश्यकता थी कि लिगेंड्स जो हैं, जो लिगेंड्स आप मेटल आयन पे या धातु पर लगाते हैं, वे जो हैं किसी किसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन्स को हाई स्पिन रख सकते हैं और किसी किसी स्थिति में उसको लो स्पिन कर सकते हैं। और खास तौर से ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस जो कि लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशंस में तब्दील आसानी से हो सकते हैं, जैसे कि D6 केस। D6 इस कोबाल्ट 3 का केस होता है और आयरन 2 का भी होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में, कोबाल्ट 3 के केस में, अमोनिया लिगेंड जो है उसकी लिगेंड फील्ड इतनी सफिशिएंट हो जाती है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को नीचे T2G सबसेट में पेयर कर देता है और हमारा फिर आंसर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता है। अब हम एक और सवाल ले लेते हैं, मल्टीपल चॉइस। और ये सवाल ये पूछ रहा है कि जो कॉपर 1 है और कॉपर 2 है, उसमें कॉपर 1 जो है वह कॉपर 2 के मुकाबले क्यों अनस्टेबल है? दैट मीन्स वी आर आस्किंग व्हाई इज आवर कॉपर 1 less stable in comparison to our copper 2. So let's just write down the choices and the question. So our question is that our fourth multiple choice is copper plus aqueous is less stable than copper 2 aqueous. Now the choices are because, so you can write down because, and you have the following choices. Number 8, copper plus has lower charge. B, it has lower ionization potential. C, it has lower size. And D, it has lower hydration energy. That means if we want to answer this question, we need to understand each of these choices clearly. When we say whether this choice is correct or not, copper plus has lower charge. Yes, that's correct. Copper plus has lower charge than copper 2. That is correct. But is it the right answer?
It's not the right answer, because despite the fact that this has a lower charge, it does not in any way tell us why it should be unstable in comparison to copper 2. In fact, if you look at the second one, lower ionization potential, yes, this will have a lower ionization potential because you are removing only the first electron from copper 0 to produce copper plus. That means you are going actually from copper 0 to copper plus, and in the second case you are going from copper plus to copper 2 plus. So what we are saying is that, of course, in this case you have the first ionization potential, in this case you have both the first and the second ionization potential. So ionization potential is also lower. So this is also correct, this is also correct, yet these are not the right choices. And let us understand why it is not the right choices. Again, if we come to the C choice, lower size, yes, it has but this choice is incorrect. This is correct as far as copper plus is concerned. This is also correct as far as copper plus is concerned, but this is incorrect. Copper plus will have a larger size, so automatically this choice is obviously a wrong choice. Copper plus, because it will have a larger size than copper 2 plus, because in copper 2 plus you have removed the second electron, and therefore the size of the copper 2 plus will be much smaller than the size of copper plus. So this we can immediately remove. Now we come to the D choice. The D choice says lower hydration energy. Now you can see very well, we have said copper plus aqueous. That means we are saying that this copper plus is not a gaseous copper plus, and we are not comparing this gaseous copper plus with our gaseous copper 2 plus. We are comparing the stability of a copper plus aquated. That means water molecules have already surrounded it. Similarly, we are comparing it with the copper 2 which has been aquated. Now, this particular hydration energy, we must know that this will be smaller for copper plus. Why it should be smaller? Because the size of copper plus is large. If you have a large size cation with a smaller charge like copper plus, it will not be able to polarize the lone pair existing on the oxygen so that it could combine to give a hydrated species. So the hydration energy here will be much lower, whereas in the case of copper 2 plus is a smaller size, as I have just simply told you earlier. It is a smaller size than copper plus, and it has doubly charged, so the charge density is much larger according to Fajon's rule. If you remember, if your charge density is much larger, it will be able to attract the lone pair of the nucleophile or from water molecule much more effectively, and therefore the hydration energy for this species will be much higher. Hydration energy much higher. But the point still remains. If hydration energy is higher, why should it be more? It should be less stable, and this should be more stable, because the hydration energy is released. That means it stabilizes the system and it compensates for the excess second ionization potential in the case of copper plus to copper 2. That means the hydration energy is so large in the case of copper 2 that it compensates, more than compensates, for the second ionization of copper plus to copper 2, and therefore it takes care of not only the favorable things in copper were lower charge and lower ionization potential, but this is offset by the large hydration energy released when the water molecules bind to copper 2 plus,
and because of the high charge density on copper, and therefore this copper 2 is more stable, and therefore our right choice is lower hydration rate. Copper plus is less stable. Mind you, we were asking you why it is less stable. We were not asking why copper 2 is more stable. We were saying copper 2 is less stable because it has lower hydration energy. The amount of hydration energy released when water molecule will bind to copper plus is much smaller, and therefore it does not compensate even for its first ionization potential properly, and hence copper plus becomes unstable. Now I think I shall stop over here, and I shall continue with these MCQs in my next video.